too foggy right now. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत नया साल मुबारक। और आज 1 जनवरी है क्योंकि और 2024 जो है वो शुरू हो गया है और हम लोग यू नो वी शुड ऑल बी अ बिट एक्साइटेड अबाउट इट। इतनी ज़्यादा मुझे कोई मतलब फ़र्क तो ऑब्वियसली नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड आई होप दैट द वर्ल्ड गेट्स बेटर इन दिस न्यू ईयर इन 2024। सो आई होप कि आप लोग भी बेहतरी की तरफ जाएं और आपका साल बहुत अच्छा गुजरे और आपके जो भी गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाएँ। मैं उस तरह की इंसान हूँ कि मुझे मंडेज़ और न्यू ईयर्स और सितंबर का महीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो सारे दिन होते हैं ना, ये आपको एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं। आई मीन ऑन मंडे एज वेल यू हैव दिस न्यू फीलिंग कि अच्छा नया वीक स्टार्ट हो गया, सो वी हैव टू अकॉम्प्लिश समथिंग इन दिस न्यू वीक। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे इसलिए आ गई हूँ कि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी बेहतर है, वहाँ पर बहुत डार्क है। बल्कि लेट मी टर्न ऑन अनदर लाइट। या सो न्यू ईयर gives us that feeling of न्यूनेस बेसिकली, और इसका कोई मकसद नहीं होता। बस ये होता है कि हम सोचते हैं कि एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारी ज़िंदगी में, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, हम थोड़ा सा एफ़र्ट डाल लें और ये किसी ना किसी तरह बेहतर हो जाए, और जो भी हुआ था पिछले साल, जो भी हमने ब्लंडर्स किए थे, वो हम रिपीट ना करें। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ओवरली एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा एम्बिशियस होना अच्छी बात होती है। इस साल आपको एक बात तो, मेरे कोई गोल्स वैसे उस तरह से नहीं हैं जो कॉन्क्रीट किस्म के गोल्स होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर एंड इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग मी फॉर अ ईयर नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग मी, इफ़ यू हैव बीन अ सब्सक्राइबर, आई एम genuinely thankful to you because you give me so much motivation to create these kinds of vlogs, these kinds of content, features, and you are the reason that I make vlogs, and you are the reason that I feel happy doing it. Anyway, coming back to my previous point, और वो ये था कि in 2023, यानी कि जब स्टार्ट हुआ था 2023, I did make a vlog. No, I did make a video in which I talked about my goals for 2023. And I was thinking कि अभी मुझे दोबारा वो वीडियो देखनी चाहिए और मुझे उसको एनालाइज करना चाहिए कि कितने गोल्स मेरे कंप्लीट हुए और कितने नहीं हुए। इस साल मुझे मेरे दिमाग में कुछ गोल्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, बट आई हैव नॉट क्लियरली रिटन दैम डाउन, और आई हैव नॉट रियली डॉक्यूमेंटेड दैम, या मुझे पता नहीं है कि वो गोल्स क्या हैं। दे आर इन माई माइंड समवेयर, बिकॉज गोल्स तो सब इंसानों के ही होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है इस साल में। 2024 इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर सो मैनी थिंग्स, फॉर सो मैनी रीजन्स, होपफुली। बट मेरी सबसे ज़्यादा दुआ ये है कि दुनिया में पहली तो बात ये है कि जंग ख़त्म हो और पीस कायम हो। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं which I am anticipating, लेकिन I have a habit of not sharing things before they happen, so I will be talking about them maybe in general, लेकिन जब वो चीज़ें हो जाएंगी ना तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आज मैं अभी उठी हूँ, अभी टाइम हुआ है 8, और उठते साथ मेरा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करने का दिल कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू हैव पराठा, अंडा एंड चाय। आई एम गोइंग टू हैव 2 fried eggs एक्चुअली। देखिए, प्रेगनेंसी का ये फ़ायदा होता है कि यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट। नॉट रियली, आई मीन सम पीपल कैंट, बट मोस्ट पीपल कैन, एंड
आई एम टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दैट, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है ना, तो आपको पता है कि आई क्रेव फॉर सेवरी फूड ऑल द टाइम, एंड व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई वांट समथिंग रियली सॉल्टी विद चाय। मीठा मुझे बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ कि मेरे सामने भी ना आए। सो आई एम गोइंग टू हैव breakfast, a very nice one, and then I'm going to get ready for the day. जी जनाब, तो नाश्ता मैंने कर लिया है। उसको मैंने फ़िल्म इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी लाइट चली गई है। एज़ यू कैन प्रॉब्ली सी के पीछे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द विंडो ताकि कुछ लाइट मेरे चेहरे के ऊपर पड़े। बट अदरवाइज़ मेरे कमरे में ना सर्दियों में कोई ख़ास लाइट नहीं लगती। गर्मियों में फुल ऑन लाइट होती है, जब चाहिए होती है छाँव तो बहुत ज़्यादा लाइट लगती है और सही गर्मी लगती है और सही तपा हुआ होता है रूम। लेकिन सर्दियों में जब लाइट की ज़रूरत होती है तो नहीं लगती। बट दैट्स ओके, मुझे जब धूप लगवानी होती है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। बट हमारा रूम जो है वो सर्दियों में काफ़ी ठंडा होता है। सो नाश्ता बिल्कुल मैंने अंधेरे में किया, ऑलमोस्ट अंधेरे में। एंड फिर मैंने उसको फिल्म नहीं किया। मैंने कहा क्या आप ये एक बहुत ही डार्क सी फुटेज आप लोगों को दिखाऊं। बट आई हैड अ रियली fulfilling and good breakfast. Alhamdulillah, I feel so blessed to be able to wake up every morning and have breakfast without any complications, without any health complications, without any financial issues, without any issues related to mental health as well. बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है, और बहुत ज़्यादा शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारे मुल्क में ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड भी हैं और उनके लिए वो इस मुल्क में कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर फेस कर रहे हैं जब से वो पैदा हुए हैं, और पूरी ज़िंदगी उनकी इसी तरह से गुजर जाती है। बट वी आर क्वाइट प्रिविलेज्ड, सम ऑफ अस आर, मोस्ट ऑफ अस आर quite privileged in that way. आजकल जो हालात हैं इंटरनेशनली वो देखते हुए मुझे लगता है कि हमें हर सांस लेने के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें दुआ करनी चाहिए पूरे दिल से उन लोगों के लिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। और सबसे दुखी बात यह है कि हम इस तरह के जब भी कोई वाक़यात होते हैं तो हमें ये याद दहानी कराई जाती है कि वी हैव टू लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी, बिकॉज आवर पीस एंड आवर डिग्निटी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, they are just a matter of somebody's benevolence. When they start, or when they decide to not be benevolent anymore, they can take it away from us. That is the saddest thing. Anyway, बात काफ़ी सीरियस हो गई है. I did not want it to be very serious. I was just discussing कि I had a beautiful breakfast and it made me feel very happy, very grateful, and it felt so nice to have breakfast in peace. My husband gets up really early in the morning क्योंकि उन्होंने काम पे जाना होता है और वो फिर नाश्ता करके काम पे चले जाते हैं। तो यूजुअली मेरी आंख तब खुलती है when he is just about to leave, और वैसे तो मुझे उनके साथ नाश्ता करना पसंद है. I wake up with him, but at times he just leaves before me. And एक और चीज़ जो है वो ये है कि वो नाश्ता जल्दी में करते हैं क्योंकि उन्होंने तो काम पे जाना होता है ना. तो मैंने क्योंकि काम पे लेट जाना होता है, इवनिंग में मैं जाती हूँ, तो मैं आराम से उठती हूँ, आराम से नाश्ता करती हूँ. एंड आई जस्ट लव दैट फीलिंग. मैं जब कुछ अरसा जब मैं जॉब नहीं कर रही थी, बिफोर माई जॉब स्टार्टेड, जॉब कर रही थी बल्कि, yes, I did have a job, but it was a 2-day a week job, and it was a very relaxed sort of a job, I would say. बहुत मज़े की जॉब थी. I still remember it, like I still think about it sometimes कि वो कितना मज़े का दौर था. और ये 2016-17 की बात है. So I used to spend most of my time at home, और ख़ास तौर पे घर पे कश्मीर में अम्मी अबू के पास. And that time was honestly the golden period of my time.
क्योंकि मैं 2 दिन काम करती थी और बाकी दिन मैं किताबें पढ़ती थी और अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करती थी और सुबह मैं आराम से नाश्ता करती थी और आराम से अपनी चाय पीती थी. द प्लेयर ऑफ हैविंग अ कप ऑफ टी without having to rush the process is just so beautiful. If you think about it, if you think about the fact कि आप सुबह उठें and there is no rush and you just go and you make your breakfast. I used to make my own breakfast at that time. और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता था. It used to feel like a hug from myself, like making breakfast and then making tea for myself however I wanted it to be, whether I wanted it to be strong, whether I wanted it to be mild, whatever consistency I wanted it to have. और फिर आराम से बैठ के without any distractions, without anyone talking to you, without you talking to anybody, and without thinking about your schedule for the day ahead, without having any responsibilities whatsoever. वो जो टाइम होता था ना, दैट यूज़ टू बी सो ब्यूटिफुल एंड आई यूज़ टू चेरिश इट सो मच. जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ ना कि आई फेल्ट सो गुड हैविंग दैट ब्रेकफास्ट एट दैट टाइम एज वेल. आई यूज़ टू बी सो थैंकफुल फॉर इट एंड आई यूज़ टू बी कम्प्लीटली अवेयर ऑफ इट. ऐसे नहीं था कि जब वो टाइम गुजर गया तो फिर मुझे पता चला कि ओ वो तो बड़ा अच्छा टाइम था. तो वो बड़ा मज़े का दौर था और मैं रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती थी उस पर भी. तो उसके बाद जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई, एवरीथिंग बिकेम अ रोलर कोस्टर राइड. सुबह भाग के उठो, लाइक 5:30 6 पे उठ जाओ, फिर तैयार हो. और फिर क्योंकि आई हैव एन एंशियस माइंड, तो अगर मैंने कहीं पर 8 बजे पहुंचना है तो आई हैव टू बी रेडी बाय 7. I have to be ready by 6:30 because I cannot be late for anything. I feel absolutely devastated if I have to explain myself to somebody कि oh I am late. And I think this is a good thing and also a bad thing. अच्छी चीज़ इसलिए है because this is something that has been given to me by my father. He's a very punctual person and I have always heard him say कि आपको कहीं भी पहुंचना है तो आपको वक्त से पहले पहुंचना चाहिए और आपको जल्दी जाग जाना चाहिए और जल्दी उसके लिए प्रिपेयर कर लेने चाहिए. और मेरे जहन में ये इतना ज़्यादा बैठ चुका है बिकॉज आई फाइंड दिस हैबिट टू बी क्वाइट इम्प्रेसिव कि आप टाइम पे जगह पे पहुँचे. लेकिन उसके साथ साथ जो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ ना कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी, वो एक नेगेटिव चीज़ है. एंड आई होप कि वो मैं थोड़ी सी ओवरकम कर लूँ. बट कमिंग बैक टू हैविंग ब्रेकफास्ट इन पीस, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल feeling that one can have, the most beautiful privilege that one can have. So I had that breakfast and you see it's the first day of the year, so I'm hoping that I can have more of those days in the rest of the year as well. Possible नहीं लगता वैसे मुझे, लेकिन दुआ तो बंदा कर सकता है. You can wish for something like that and that's completely fine. अल्लाह ताला आपको कुछ भी नवाज सकते हैं. आपने जस्ट दुआ करनी होती है. आपका काम तो दुआ करना है ना. आपका काम ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा. आपका काम होता है कि सिर्फ आप दुआ करें, राइट. सो राइट नाउ आई एम प्रेइंग कि I can have more of these relaxed days in this year of 2024, and I can have the ability to count my blessings and to realize that I am blessed in so many ways. Anyway, so इतनी लंबी बातें मैंने की हैं आपसे. I think मेरा इरादा नहीं था इतनी लंबी बात करने का, but it was very nice talking to you guys. I feel so relieved when I have the ability to word my thoughts. It feels so good. It feels therapeutic, just like journaling. In my last video I was talking about journaling and how it is very important to give your emotions that agency, that respect that they deserve, and write them down somewhere. And if you can't write them down, you need to speak them out. You need to share them with yourself and with other people as well. So when I make YouTube videos, most of my YouTube videos revolve around my thoughts and my perspective on different things.
And when I talk about those things, I feel strangely validated. I feel strangely heard, you know, and that is a nice feeling as well. So you know, talking about all of these positive things has made my day so much better already. I hope that it has made your day better as well. I am wishing कि मैं कल इस वीडियो को अपलोड कर दूँ और बहुत ही ज़्यादा डिले ना करूँ, because if I upload it like 2 weeks बाद में तो फिर उसका मकसद क्या है? उसका कोई मकसद नहीं. And this is going to be a long vlog क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम करने हैं. And on that point I need to tell you. Okay जनाब, हमारी लाइट आ गई है. Maybe you can feel the difference in the picture and everything. फ़िलहाल मैं गई और जाकर मैं अपना ये बहुत बड़ा पानी का कंटेनर टम्बलर लेके आई हूँ और अभी आई नीड टू ईट दिस टैबलेट. दिस इज़ Fee-Fol-Vit. This is for, you know, certain prenatal vitamins as well as a little bit of iron. तो ये मैंने सुबह में खानी होती है आफ्टर ब्रेकफास्ट. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उसके बाद मैंने जो काम करना है वो ये है कि आई एम गोइंग टू टेक दिस लिटिल नोटबुक एंड मेक अ टू डू लिस्ट फॉर टुडे. ये जो नोटबुक है ना, इट हैज़ अ हिस्ट्री. आई गॉट दिस नोटबुक इन 2015. जब मैं कहती हूँ ना कि आई एम अ होर्डर ऑफ नोटबुक्स, आई मीन इट इन ट्रू स्पिरिट्स. एंड ऑल्सो आई कलेक्ट नोटबुक्स और उनको बहुत संभाल के भी रखती हूँ. तो दिस नोटबुक इज़ ऑलमोस्ट 10 years old. Right now I'm going to write all of my goals down for today and then start working on them. Okay, तो अब मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग बाहर आ गए हैं खाने पीने के लिए. एक्चुअली मुझे एक और रेस्टोरेंट जाना था, दैट बाय द नेम ऑफ डालिया. नया रेस्टोरेंट खुला एंड वी वांटेड टू ट्राई दैट, बट हमारी किस्मत ये है कि मंडे को वो बंद होता है. सो वी हैव कम हियर नाउ एंड वी आर गोइंग टू ट्राई, वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई एनीथिंग न्यू. वही जो चीज़ें हम लोग पहले भी खा चुके हैं वही खाने लगे हैं. बट येस, वी आर वेटिंग फॉर फूड नाउ. वी हैव ऑर्डर्ड सम थिंग्स. मैंने पास्ता ऑर्डर किया है. समर, आपने क्या ऑर्डर किया है? Moroccan steak with mashed potatoes, है ना? And I've also ordered pina colada. हम लोग रोस्टर्स पे हैं अभी और इनका pina colada is my favorite. I've tried pina colada at other places as well, लेकिन इनका जो है वो मुझे बहुत पसंद है. So we are going to have lunch and then I'm going to go back to the city. Yeah, just waiting for our lunch at the moment. Moroccan steak भी. Looks so good. Look at this. Look at my pasta. Now we are going to have the fudge brownie. It looks so good. अच्छा, आप पोर्ट्रेट में लेती हैं?